Assalamualaikum everyone, this is Huma, your English instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing great. I welcome you all in this video lecture where I am going to explain all the paragraphs from chapter number 10, which is A Mild Attack of Locusts. Basically, this story is written by Doris Lessing. She was born in Kermanshah, Iran on 22nd October 1919. She was a British Zimbabwean novelist. She wrote fiction, libretto, non-fiction and short stories. Her major works include The Grass is Singing, The Golden Notebook, Shikasta and many more. She died in London, United Kingdom on 17th November 2013. Now let's move on to the explanation of paragraph number 1, in which there are following complex words. The first word is mild, which means mamuli, while in English it means not severe or serious. Basically ये word paragraph number 1 में नहीं use किया गया, बल्कि ये इस story के title में use किया गया है. The second word is streak, which means silsila. In English it means trace, line or band. The third word is rust, जिसे उर्दू में हम जंग कहते हैं. In English it means oxidize or decay. The next word is locust, जिसे उर्दू में टिड्डी कहते हैं. While in English it means a large, mainly tropical grasshopper with strong powers of flight. The next word is yelled, which means chillaya. In English it means shout, call out or screamed. The next word is plowshare, जिसे उर्दू में हल्का फाला कहते हैं. In English it means the main cutting blade of a plow. The second last word in this paragraph is clamor, which means shore. In English it means a loud and confused noise. And the last complex word used in this paragraph is gong, जिसका उर्दू में मतलब है घंटा. In English it means a large flat circular piece of metal that you hit with a hammer to make a sound like a loud bell. Now let's move on to the explanation of paragraph number 1. In this paragraph, the writer basically introduces the characters as well as story. The first character is of Lady Margaret, जो कि फॉर्म की ऑनर है, while the second character is Richard and the third character is Old Stephen. अब बेसिकली स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि एकदम से शोरगुल स्टार्ट होता है, लोग कहते हैं कि देखो देखो वो वहाँ पे हैं. अब ये सारा तमाशा देखने के लिए मार्गरेट उनको ज्वाइन करती है कि क्या हुआ है, और मुलाजिम भी घर से बाहर आते हैं और वो पहाड़ियों की तरफ देखते हैं, चट्टानों की तरफ देखते हैं, और वहाँ उन्हें ये नज़र आता है कि टिड्डी दल का झुंड जिनका जंग की तरह का रंग है वो आसमान से उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं. अब ये सब देखने के बाद रिचर्ड जो है वो घर के बावर्ची को बुलाता है, जबकि स्टीफन जो है वो बुलाता है घर के मुलाजिम को, और उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वो थोड़ा सा शोर पैदा करें जिसकी वजह से लोग अलर्ट हो सकें. अब बावर्ची ये काम करता है कि वो दरख्त में एक लटका हुआ हल्का फाला उठाता है और उसे शोर करने की कोशिश करता है, जबकि मुलाजिम स्टोर के अंदर जाता है और कोई ऐसी धात मेटल की कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहा होता है जैसे कि टिन कैन, जिससे कि शोर पैदा किया जा सके. और उसके बाद हर तरफ शोर शराबा हो जाता है और एकदम से हल्ला गुल्ला मच जाता है, हर तरफ आवाज़ें आने लगती हैं. ये बेसिकली किया इसलिए जाता है ताकि उनके लोगों को वार्न किया जा सके कि हम पे टिड्डी दल का हमला हुआ है. और इसके बाद वो ये देखते हैं कि सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और वो इकट्ठे हो गए और वो आसमान की तरफ, पहाड़ियों की तरफ इशारे कर रहे हैं. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.